Hello everyone and welcome back to AFIT TV. This is the fourth episode of the series How to Design Your Workout Plan, and in this video we will discuss the most effective exercises which you can do at home to train your shoulders. And trust me guys, this will not be the common exercises which you generally see in every other videos. मैं कुछ डिफरेंट एक्सरसाइजेस लाया हूँ जिससे कि आप एक डिफरेंट स्टिमुलस प्रोवाइड कर सको आपके शोल्डर मसल्स को, जिससे कि उनकी ग्रोथ में आपको हेल्प मिल पाए. सो मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक देखें. सो इस वीडियो में हम लोग एनाटॉमी को इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे जितना कि बैक और चेस्ट में किया था, क्योंकि शोल्डर की एनाटॉमी जनरली सबको पता होती है कि उसमें क्या क्या हेड्स होते हैं और उनको कैसे ट्रेन करना होता है. तो मैं जस्ट आपको एक जनरल ओवरव्यू दे दूंगा जिससे कि आपको पता चल जाए कि अगर आपको नहीं पता हो तो पता चल जाए कि क्या क्या मूवमेंट होते हैं, क्या क्या हेड्स होते हैं और उनको कैसे ट्रेन करना है. सो क्विकली लेट्स सी द एनाटॉमी एंड देन वी विल गो टू द एक्सरसाइजेस. सो गाइज, एज यू ऑलरेडी नो, शोल्डर्स और डेल्टॉइड मसल्स में 3 हेड होते हैं: एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मीडियल. मीडियल को आप लोग लैटरल हेड्स के नाम से भी जानते हो. एंटीरियर का मूवमेंट होता है लिफ्टिंग समथिंग अप इन द फ्रंट डायरेक्शन ऑफ योर बॉडी, और या फिर पुशिंग समथिंग अवे अबव योर शोल्डर अवे फ्रॉम योर बॉडी. लैटरल का मूवमेंट होता है लिफ्टिंग समथिंग अप बट नॉट इन द फ्रंट बट ऑन द साइड्स. एंड पोस्टीरियर का मूवमेंट होता है पुलिंग समथिंग व्हेन योर हैंड्स आर मेकिंग 90 डिग्री और हायर एंगल विथ योर लैट्स. Apart from these, we always overlook certain group of muscles which are also important in shoulder anatomy, that are infraspinatus, supraspinatus and teres minor. ये मसल्स हमने बैक की एनाटॉमी में भी डिस्कस करी थी, एंड दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन शोल्डर एनाटॉमी बिकॉज दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशन ऑफ योर शोल्डर. दैट इज़ वाई यू शुड ट्रेन देम इन शोल्डर एज वेल एज बैक. So now let's see the exercises to train your deltoid muscles at home.
सो गाइस, ये था वीडियो ऑन द एक्सरसाइजेज विच यू कैन डू एट होम टू ट्रेन योर डेल्टॉइड्स. वन थिंग आई वांट टू से इज, अगर आपके पास घर में डंबल्स है या आपके पास घर में ब्रिक्स है, तो देर आर अ लॉट ऑफ एक्सरसाइजेज विच यू कैन डू एट होम टू ट्रेन योर शोल्डर्स. बट माई सजेशन वुड बी टू इंक्लूड सम काइंड ऑफ वेरिएशंस इन योर एक्सरसाइजेज, जिससे कि आप आपके मसल्स को डिफरेंट स्टिमुलस प्रोवाइड करोगे और उससे आपकी मसल ग्रोथ भी होगी. So that is why I have included these exercises in this video, so that you can get that variation in your exercises. So I would suggest you to include some of the exercises from this video in your workout and see if it helps you in your muscle growth. So this was all about today. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. I will see you in my next video. Thank you.